Hello, my little tiny tots. How are you? Fine, children. Let's do the revision of EVS of the lesson means of transport. You all are preparing for your annual examination, na? And these lessons will come. We have already learned, but in very short, quickly we will do the revision and some new question will can be formed from each and every line of the chapter. Na? I will form some new questions and tell the answers also. You listen carefully. In the exams, the question can be come from between the lesson. I'm sharing the book pages. You don't worry for that. And read it from here. What are means of transport? What are transport, dear? Transport refers to the movement of people, animal and goods. इन लोगों का और सामान का और थिंग्स का एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट. वी कैन वॉक एंड रीच नियर बाई प्लेसेस. अब हमको कोई पास में जाना है तो हम नियर बाई प्लेसेस में वॉक करके चले जाएंगे. बट इफ वी हैव टू गो वेरी फॉर ऑफ प्लेसेस in another city, in another country, then we need a mean of transport. Transport के लिए कोई हमको कोई चीज की जरूरत पड़ेगी ना. That is the mean. वो means क्या क्या होते हैं? It can be car, bus, train, aeroplane. And children, these transports, mean of transport are categorized into three groups. What are the three main means of transport? Land transport, water transport, air transport. The question can be asked, name the three means of transport. You will be able to answer land transport, water transport, air transport. Yes, if it will be asked car, bus, train, these are the mean of what type of transport? Land transport, water transport, air transport. Of course, land transport. Na? And what is the movement of people, good and animals from one place to another place is called? Then you will answer transport. What you will answer? Transport. Okay, children? Just like that, question can be from anywhere. If any picture can be given, it can be asked. These group of vehicles are the means of what type of transport? Then you will say that it is a land transport. Many means of and where means of transport they move, these transport move, they move on land. Car, buses, scooter, bikes, auto rickshaw are mainly we in our life generally we use this land transport. आप रोज तो केवल लैंड ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हो ना. वी यूज एयर एंड वाटर सम टाइम. इट द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, नेम द commonly used mean of transport. Then what will you will write? What you will answer? Commonly use of mean of transport कौन सा है? Land transport. Okay, you have to answer each and every questions. Children, for going to travel long distances we use train. And on which train runs? क्या train क्या road पे चल देती है? No, it runs on track, railway track. And the train is quite cheap, fast and carry many passengers and goods can be carried in here. Huh? And the train who carries the passenger are called passenger trains. And the train which carry the goods are called goods train. मालगाड़ी होती है ना. Some metro cities they have a network of metro train for their local transport. और जैसे आप दिल्ली में जाते हो तो देखो कितनी बढ़िया मेट्रो की फैसिलिटी है. वो वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट है. And the local transport of metropolitan cities is, if the question will be asked, then what you will answer? Metro. And one of the famous local transport of Mumbai is local train. Yes. Children, to move on land, all vehicles need wheels. एक तो उन सब में पहियों की जरूरत होती है. The vehicles pulled by man or animal are slow moving vehicle. जैसे कार, रिक्शा है and साइकिल है, वो इंसान खींचते हैं. They are slow moving vehicle. But some are very fast moving vehicle like cars, scooters. Why? Because they have powerful engines and they run on diesel, petrol or CNG, and they are called fast moving vehicles. And train किससे चलती है बेटा? कोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी तीनों से चलती है ना. And what are water transport? जब हम
if there is a transport of man, goods and people from one place to another place in water, it is called water transport. ठीक है. A ship is used for traveling long distances across the sea. समुद्र में एक जगह से मुंबई से गोवा जाना होता है, इतना दूर ट्रेवल करना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप क्या बोट से जा सकते हो? नहीं. फॉर दैट यू नीड शिप. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किसका चाहिए? शिप की जरूरत होती है ना. एंड कार्गो शिप्स आर यूज्ड टू कैरी गुड्स. और चीजों को कैरी करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कार्गो शिप की. एंड बोट्स एंड स्टीमर सेल्स ऑन रिवर्स और लेक में चलती हैं. These all are the, this is the picture of water transport. And the most interesting transport is air transport. आप सब, हम सब सोचते हैं क्यों हम लोग बर्ड्स होते तो कितना अच्छा होता ना, हम लोग फ्लाई कर सकते. But the science has invented something by which we can fly in the sky. Aeroplane and helicopter are the means of transport by air. You can identify these pictures. These are the pictures of air transport. And the name the fastest means of transport? Air transport. An aeroplane lands and take off from airport. Helicopters are used to fly over short distance on hilly areas. जब पहाड़ियों पे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उसके टॉप पे क्या चीज, क्योंकि इसको लैंड करने के लिए छोटी सी जगह की जरूरत होती है, तो ये पहाड़ियों के टॉप पे, प्लेटो पे लैंड कर जाता है. एंड एस्ट्रोनॉट गो इनटू स्पेस इनटू अ स्पेसक्राफ्ट ना. And children, what is this? This is an animal which is used also a used of means of transport. These ponies are used to carry people and goods on hilly areas. ये कहाँ पे यूज होते हैं? hilly areas में. And camels are used in deserts and elephants are used in forest. Who is called the ship of the desert? Camel. Forest में किससे करते हैं? Elephant. Hilly areas में mule and ponies. Come to the next. These we have done already, na? Yes, let's do the book exercises. You all have done. Let's revise in very short. How many wheels are there in an auto rickshaw? 3. Some metro cities have metro train. The fastest means of transport is aeroplane. An astronaut go into space in spacecraft. Astronaut किस में जाते हैं बेटा? Spacecraft में जाते हैं. चलो, let's fill. A train runs on. ट्रेन किस पे चलती है? ट्रैक्स पे, पटरियों पे, ट्रैक्स पे. To move on land, all vehicles need wheels. लैंड पे चलने के लिए क्या चाहिए? Wheels, पहिए. Dash ships are used to carry goods. जो लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करने, वाटर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए शिप्स की जरूरत होती है. लेकिन जो वो शिप जो थिंग्स को कैरी करते हैं, गुड्स को, उनको क्या कहते हैं? कार्गो शिप. हम लोग क्या, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी चीजें जाती हैं दूसरे कंट्रीज को, तो किस शिप में जाती हैं? कार्गो शिप में. An object lands and take off from an airport. In desert, camels are used to carry the goods. Give 2 examples. Means of land transport. कार, बस, कुछ भी हो सकता है. Fuels used in vehicles. पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कुछ भी हो सकता है. Means of air transport क्या हो गए? Aeroplane and helicopter. Very easy. Yes, you can do this also. चलो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें. Yes. Answer in one word. The train that used for local transport in some metro cities is called metro train. Which of the animal is used in forest for carrying people and goods? Elephant. Which animal is called the sheep of the desert? Sheep of the desert किसको कहते हैं बेटा? Camel. Name the animal used in hilly areas. Mules and ponies are used in hilly areas. Now tell me true or false. There are 2 means of transport. False. There are 3 means of transport: air, water and land.
Elephant is called the ship of the desert. This is also false. Camel is called the ship of the desert. Bullock cart is a slow mean of transport. Right. Helicopters are used to fly short distance. True. Now come to this question answer. Why do many people travel by train? Many people travel by train because it is quite cheap होता है, सस्ता पड़ता है, फास्ट होता है. हम लोग इसमें बहुत सारे पैसेंजर एक साथ बैठ के जा सकते हैं ना. एंड वी कैन कैरी गुड्स ऑल्सो, हम अपने साथ ले भी जाते हैं. पैसेंजर ट्रेन और उस ट्रेन में क्या डिफरेंस है बेटा? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पैसेंजर ट्रेन? पैसेंजर ट्रेन में क्या डिफरेंस है? Differentiate between passenger train and goods train. The train that carry passengers are called passenger trains and train that carry goods are called goods train. ठीक है? They are fast moving train and they are slow moving train. ठीक है? I hope now you have understood this. आप सबको ये lesson समझ में आया? What are the three main means of transport? Air transport, water transport, land transport. ठीक है? Give me the example of water transport. Ship, boat and steamer. For the long distance, suppose we have to go from one country to another country by ship, water transport से, तो हम क्या यूज करेंगे? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए शिप यूज करेंगे ना, शिप में से जाएंगे. और सपोज वी हैव टू जस्ट क्रॉस अ रिवर, देन वी विल यूज बोट और स्टीमर्स. चलती है ना, आप गंगा जी में आपको जाना होता है या किसी रिवर में, देन ये क्या आप शिप से जाते हो? नो, यू यूज बोट एंड स्टीमर्स. स्टीमर्स और बोट में क्या अंतर है? बोट ह्यूमन बींग उसको पूरा रो करके ले जाते हैं एंड स्टीमर्स में आपके क्या लगा होता है? इंजन लगा होता है ना. नाउअडेज आप लोग इसको यूज करते होंगे. चिल्ड्रन, एंड लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए? कोई भी चीज जो कि पहिए पे चलती है, व्हीकल्स पे चलती है, दे आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? द मूवमेंट ऑफ पीपल, थिंग्स from one place to another place is called transport. Okay, ये सब हम लोग कर सकते हैं. और डिफरेंट तरह की ट्रेन्स होती हैं, मेट्रो ट्रेन होती हैं जो कि मेट्रो सिटी. व्हाट आर नेम द मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया? दिल्ली, मुंबई, Kolkata and Chennai. These are the four metro cities of India. Okay, children. And what special train is used in Mumbai? Local train. और दिल्ली में तो सबको पता है मेट्रो ट्रेन चलती है. Nowadays तो लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन चलती है. In our Varanasi it is also planned. Who maybe after 5-10 year हमारे यहाँ भी चलने लगे ना. Children, you read each and every line of the lesson. आपको पूरा पढ़ना है. And name some animals which are used as means of transport. In desert, which animal is used as means of transport? Desert में camel. And in forest, कौन सा mean of transport animal, कौन सा animal यूज होता है as a mean of transport? Elephant. On in desert में camel होता है. And on hilly areas, पोनी एंड मूल्स, खच्चर. आप वैष्णो देवी जाते हो तो आप देखते हो ना वहां पे थिंग्स वगैरह. आप कभी नैनीताल गए होगे, हिमाचल, नैनीताल, इन सब जगह पीपल कैरी अपने यूटिलिटी आइटम को लोग कैसे कैरी करते हैं? यस, पोनीज एंड मूल्स पे रख करके वो नीचे से ऊपर चीजों को ले जाते हैं. दे आर यूज्ड एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके. एंड जो सम स्लो मूविंग व्हीकल होते हैं, कुछ फास्ट मूविंग व्हीकल होते हैं. स्लो मूविंग व्हीकल्स आर ड्राइवन बाय ह्यूमंस, जैसे साइकिल, रिक्शा, ये सब चीजें. एंड द फास्ट मूविंग किससे करते हैं? इंजन से. इंजन किससे चलता है? फ्यूल, पेट्रोल और सीएनजी, ये तीनों चीजों से मिलके इंजन चलता है. एंड व्हाट इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्या है? Yes, aeroplane. Air transport is the fastest means of transport. I hope you all will be able to answer such type of questions. Okay, children, read the lesson again and again. Okay, bye bye. Meet you soon in the next class. Prepare for your annual examination. Bye bye, dear. Meet you soon in the next class. Keep on learning. सब लोग याद करते रहेंगे कंटिन्यूअस एंड लर्न
The diagram, what the diagram, in this diagram what is asked, you have to read that also. Okay children, means name of the diagram. I have to identify that also. Bye bye, meet you soon in the next class.